Now let us discuss the classwork MCQs of the chapter Partnership Act. The MCQs are also we are discussing because they may be asking some of the MCQs in that, and they are also given in the study material. तो मटेरियल में उन लोगों ने MCQ दिए हुए तो हम डिस्कस करने वाले हैं. बाकी ज़्यादा फोकस तो डिस्क्रिप्टिव पे है, बट MCQs थोड़ा बहुत जो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो नवकार मटेरियल से क्वेश्चन MCQs ऑफ द क्लास वर्क. क्वेश्चन नंबर 1. The term partnership has been defined under dash of the Partnership Act 1932. पार्टनरशिप का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में दिया है? आंसर बी, सेक्शन नंबर 4. Question 2. Partnership for which no period or duration has been fixed under the Partnership Act is known as. ऐसी पार्टनरशिप जहां पे कोई पीरियड फिक्स ना किया गया हो, ड्यूरेशन फिक्स ना किया गया हो, उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट विल. आंसर डी. मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ पार्टनरशिप इज सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? म्यूचुअल एजेंसी. आंसर डी. बिजनेस टू बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. द फर्म इज अ नेम ऑफ. फर्म नेम किसको बोलेंगे? डी ऑप्शन. द कलेक्टिव नेम अंडर विच इट कैरीज ऑन द बिजनेस. Partnership formed for a purpose of carrying on the particular adventure or a undertaking is known as a particular partnership. D. In the absence of agreement to the contrary, all the partners are entitled to share the profits equally. D option. Agreement में अगर कुछ भी ना बोला हो तो सभी पार्टनर इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे. पार्टनरशिप एट विल इज वन. पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? सी ऑप्शन. विच डज नॉट प्रोवाइड हाउ लॉन्ग फॉर द बिजनेस विल कंटिन्यू. कितना बिजनेस चलेगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि उसका ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया गया है. क्वेश्चन नंबर 8. What among the following is not an essential element of a partnership? पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन. द बिजनेस मस्ट स्टार्ट within 6 months from the date of agreement. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. क्वेश्चन 9. A partner can be expelled if. पार्टनर का एक्सपेल्सन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? A. Such expulsion is in the good faith. Which of the following is not a legal rights of a partner, that is which he cannot claim as a matter of right? नीचे में से कौन सा राइट पार्टनर को बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा? डी ऑप्शन. राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, क्योंकि रेम्यूनरेशन उसे तो ही मिलेगा अगर एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया होगा तो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर. कौन सा इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर नहीं होता है? जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के टॉपिक में हमने देखा था, आउटसाइड इम्प्लाइड अथॉरिटी. सी ऑप्शन. टू एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. द रिकंसिडिएशन ऑफ द फर्म टेक्स प्लेस इन केस. कौन सी सिचुएशन में रिकंसिडिएशन होगा? एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्सन, ऑल ऑफ दिस. सभी सिचुएशन रिकंसिडिएशन क्रिएट करेगी. A new partner can be admitted in the firm with the consent of. नया पार्टनर को फॉर्म में एडमिट करने के लिए किसका कंसेंट चाहिए? ऑल द पार्टनर्स. ए ऑप्शन. द पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन दैट एक्सपेल्सन पावर इज एक्सरसाइज. पार्टनर को एक्सपेल करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए?